Yes, Gautam, you can start. Hey guys, hi. Very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm going to take your today's session on NCERT class 10th, fourth chapter, that is quadratic equation. So how are you all guys doing? How's life going on? Do let me know fast. So very good evening to all of you. Welcome to the session. So I'm able to see so many students here right now. So Maulik is there, Sana, Akshara, Dia, Pragati, Shivang, and Nanda. Okay, Huzefa, Dhruv, Harshil, Jagdish, Avyaz, Lucky, Akash. Very good evening to all of you. कैसे हो तुम लोग? How's life going on, guys? So once again, we are back, and our today's session is about quadratic equation. So are you all guys ready to start that? Super excited? Come on, tell me fast. Are you all ready to start it? What do you say? Hi Sana, good evening. Hi Harshil, hi Gaurav. Good evening Kanchan. Hi Ridim. How are you guys? All set? Ready? Your teaching is amazing. Thanks a lot, Dhruv. Hi Chirag. Hi Sahil. Hi Shlesha. Hi Honey. How are you guys all doing? All good, all great? Chalo, so shall we start guys? Shuru kare kya? Ready? Okay, so let's start our today's session on quadratic equations. And in this quadratic equations, we will have 4 to 5 sessions where I'll be telling you some basics also and those questions which may come in your examination, which are most probable questions. Okay, so we'll be talking about both of them. So let's start our today's session first of all. So I hope if we move on, I hope you might be knowing about the basic definition of the quadratic equation. So if I talk about the basic definition of the quadratic equation, so any quadratic equation can be written in this format. Let me just, okay. So any quadratic equation can be written in this format, isn't it? Ax square plus bx plus c. Now, in this quadratic equation, you all might be knowing that since it is a quadratic equation, we have already talked that since it is a quadratic equation, it will have two zeros and we name it alpha and beta. This you would have studied in chapter polynomials, isn't it? Polynomials में हमने सारी बातें की हुई थी. So alpha and beta, if they are the two zeros, so the first question comes that what are those two zeros or how shall we find it? Because that forms our first subject matter. And in polynomials also we had learned this thing only, isn't it? That how we can actually find the zeros of the polynomial using different method. So the first method which you have been knowing since class 9th, but still it is in class 10th as well, that is middle term splitting, isn't it? And it is there because it is also important. So today I will be telling you a little bit about middle term splitting as well. So those students who might be having some problem, it's a good chance for you to revise it. Okay, chalo. So in this ax square plus bx plus c, I'm pretty sure you might be knowing that a, b, c, they are constant and x is a coefficient. Okay, chalo. So let's move on. Say for example, I have means I have to find a quadratic equation of any zero. So let me just take an example and show it to all of you guys. So let me take like okay, so 2x square minus 9x plus 7 equals to 0. Say for example, I have to solve this question and I have to do middle term splitting to actually find the zeros of the polynomial. So how does it work? So you have to understand that part. Whenever you have to do a middle term splitting, there are 3 steps. So the first step says that you have to actually take the coefficient of x square and the constant and you have to multiply them. Okay, so you have got here 2 into 7. 2 into 7 is nothing but 14. Fine. So this is the first step. Now if I talk about the second step, so the second step says that here you have to break this 14 into two parts. You have to break this 14 into two parts such that it should form the middle term. What I really mean that first of all try to write 14 into two multiples. So one possibility is you can write it 1 into 14, or second possibility is that you can write it 2 into 7. Now you just answer me, how will you be able to make minus 9 using 1 and 14 or 2 or 7? What I mean to say that can you make minus 9 by adding or subtracting 1 and 14? Is there any possibility? Obviously no. I think you might be understanding no. But can you make minus 9 using 2 and 7? Using addition, subtraction, something like that?
So answer should be yes. Why? Because you can write minus 9 as nothing but minus 2 and minus 7. Minus, it is along with x, so minus 2x minus 7x. That will make you minus 9, isn't it? So this is called as middle term splitting. Middle term has been split into two portions. That is called middle term splitting. Fine. And the remaining plus 7 will be as it is, this constant part, and this 2x square will be as it is. First of all, tell me that did you all understand till here? यहाँ तक की बातें clear है क्या? Come on, everyone, just say me fast. Did you all understand till here? यहाँ तक की बातें clear है क्या? Fast, fast, fast. I want an answer from all of you. Okay. Most of the students have even solved it. Sir, why don't you teach in Vedantu paid classes? Harsh, I do teach in paid classes as well. I do teach. Okay. Chalo. Okay, so Harsh Sharma. Okay, fine. Chalo, if you all understood, so from here now we are going to take 2x as common. What is remaining is x. Here nothing is remaining, so minus 1. From these two terms I can take minus 7 common, so I have taken minus 7. Remaining is x. Here nothing is remaining, so minus 1 will be here because we have taken already a minus common. X minus 1, that will be common. X minus 1 came and 2x minus 7 is here. So what we actually got, we got x minus 7 into 2x minus 7, and hence if you find the 0 of this polynomial, here you will get 7 by 2 and here you will get 1. That's it. Balle balle. Did you all understand? Come on, tell me fast. Did you all understand it? Can I get a yes from all of you? Or can I get a like from all of you? Yaar, aaj to maine pucha hi nahi. What's the number of likes on the video? And how many students watching right now? Come on, come on. Can anyone give me that data? Okay, sorry, I was not able to see your chats. But those students who are on YouTube and they also want to do that live chat with me, so they can join Telegram group. You just need to go to Telegram and write there lockdown routine by Harsh sir. You'll find my group. You'll be able to join that group and there you can have a live conversation with me as well. Okay, so I'm able to see that more than 300 likes are there, and how many of them watching? 423 watching. Okay, that's great. So hi to all those 423 students. Hi and love you all guys. So chalo आगे बढ़ते हैं. Let's move on and go ahead to the next part. So here's the next part. We know that there are three ways of finding the solution. The first term which we just now talked about, splitting the middle term. Second would be completing the square method. But let me tell you, this completing the square method is important for understanding, or you can learn it for understanding. But let me tell you, this has been removed from the syllabus, and this was a very big and bulky part. So since it has been removed from the syllabus, so we would not be putting much attention over this. We can skip it, isn't it? And the next method will be formula method. So this I am going to teach you here. It means not in today's class, but in this chapter. From here you will get a formula which is also called as quadratic formula, or it is also called as Sridharacharya formula. Sridharacharya formula. So I will be teaching you this formula as well and the splitting of middle term as well. Okay? So what's the number of likes on the video? Okay, can I get a live update? Mayank, where are you, buddy? Give me a live update, please. Okay, so can you all guys find the middle term splitting for this one? 400 likes. Thanks a lot, bro. Thanks a lot, buddy. Cool. So here, what we have to do, if this is the equation and we have to find the middle term splitting for this one, what we are going to do, see, rule will be same. The first term and the last term, you have to multiply them. So 2 into 10, you are going to get 20. 20 has to be broken into two parts. So the first possibility, 1 into 20. 1 into 20 is not going to give you 9. Okay. Second possibility, 2 into 10. 2 into 10 is also 20, but it is also not going to give you 9. Third possibility is 4 into 5. 4 5s are 20, and 4 and 5 can actually give you 9, isn't it? You can write 9x as 4x plus 5x. Isn't that? So once you have found that, don't you think that now you'll be able to get the final value? Do you think it or not? Just tell me. 4 and 5 will give you 9, and hence you can simply write here 2x square plus 4x plus 5x, and then plus here I guess that was 10, so plus 10 equals to 0. Will you be able to find the 0? Come on, tell me. Jaldi se bata do, 0 nikal paoge kya? Yes, -2 and 5 by 2 students are even, they have started giving the answers as well. That's great, man. Pretty good. So undoubtedly 2x will be a common thing here. So you will get here x plus 2. Here also you will have 5 common, so x plus 2. And you can take x plus 2 as common, and remaining in the bracket is 2x plus 5 equals to 0.
So we have got this. From here you got minus 5 by 2 and from here you got minus 2. Fine. I hope you all got it, isn't it? I hope you all got it. Chalo. So please conduct session for NTSE as well. Okay, I would conduct sessions for NTSE as well. Don't get worried. Chalo. I am very happy if you all guys got it. Let's move on. So now we have to do practice, little bit practice, 3-4 questions we'll do practice with on the middle term splitting so that it should be clear to all of you. Why I am doing this practice still means despite the fact that you guys have already started this in class 9, just because of one reason, that this is the most important topic. You will not use it now. You will be using it till 12th of till your class 12. In fact, those who will be taking engineering, they will also be using it. So believe me, this is damn important. And in physics, you will be always using it, always and always and always. Okay, so let's do it. So what we are going to do here again, I have got 2 and I have got 6. Can I just get the numbers here? 2 into 6. The first coefficient and the constant. 2 into 6 is nothing but 12. 12 has to be broken into two parts. So 1 into 12 does not make sense. 2 into 6 does not make sense. 3 into 4, does it make sense? Yes, because we have to get middle term as 1x. So 3 and 4, does it make sense? Yes. How does it make sense? I can write this 1x as 4x minus 3x. Are you understanding it? 4x minus 3x will actually give me 1x. Okay, and then we have minus 6 here and 2x square is already here. So I'll write 2x square as well. Did you all understand it? Can I get a yes from all of you? Okay, students are even giving the answers. Wow, man. So we have got 2x as common. X plus 2 will remain here. Minus 3 as common. X plus 2 will remain here. And then we can take x plus 2 as common and remaining will be 2x minus 3. And hence, if I make it equal to 0, I will be able to find the 0 as 3 by 2. And here the 0 will be equals to minus 2. Fine. Did you all understand it? Can I get a yes from all of you? And I want a special message from someone or means specially the message, not special message. Especially the message from those students who were finding it difficult earlier, but now they are finding it easy. Is there anyone who has found it pretty easy now? Now you guys are able to solve it very fastly. Is there anyone who has got a very huge jump in his or her understanding? Yes? Okay, fantastic, man. Shlesha, that's great. Pretty clear, too easy. Very good, fantastic, man. I'm really happy. I'm really happy, Pranav. Okay, that's great, man. Will there be Menti? No, Manish, not now, not today, buddy. We have Menti every after end of the chapter. After every chapter's end, any chapter ends, then we have a Menti. Okay? चलो अब आगे बढ़ते हैं. Too spooky. Okay. Super easy. बहुत बढ़िया. If you guys have understood, see here the solution also. I have kept the standard solution in case if you want to go through it. So 2x minus 3 into x plus 2, that's what we did. And after that, we will be also getting 3 by, we had also got 3 by 2 and minus 2. This is the 0. Okay. Chalo, let's move on. Here is the next question. Now, this will be a little tricky part because it has, now you are going to see questions like this, which were not so common in class 9. But in class 10, these type of questions will be pretty common. And students find it actually difficult. So let me tell you why it is not difficult. You have got here root 2 and you have got here 5 root 2. Again, the methodology will be as it is same. So root 2 into, and here the constant part will be 5 root 2. If you multiply, I hope you are understanding that root 2 into root 2 will be nothing but 2 and 2 5s are 10. So we have got 10. Yes. Okay. Once we have got 10, now what we can do, this 10 can be broken into two parts. So 1 into 10 or 2 into 5. I hope I need 2 into 5. Why? Because I have to take care of this 7 as well. So I'll write this 7x as 2x plus 5x. Fine. And plus this root 2x square will be there. And plus 5 root 2 will be there. Cool? Cool. Now, in these two terms, are you understanding that root 2 will be common? Why or how? Because you should be knowing that 2 can be written as root 2 into root 2. Do you all know this? So here if it is written 2, this means basically it is written here 2 times root 2 or root 2 square, isn't it? So I just take root 2x common. Remaining here will be x plus here remaining portion will become root 2 because x is already gone and 1 root 2 I have already taken here as common. So 1 root 2 is remaining here. So hence we got x plus root 2. From these two terms I'll get 5 common. So I have taken 5. Remaining is x plus root 2.
and what we got x plus root 2 as common, so hence we will get x plus root 2 as common. Remaining will be root 2x plus 5, and hence equals to 0. So we have got the 0 here, that is minus 5 upon root 2, and here the 0 will be minus root 2. Did you all understand it, my lovely kids? Come on, say me yes if you all understood that. Come on, come on, come on. Jaldi se. Wow, many of them are even answering this. Sir, why are you not teaching 10A or 10B? Harsh, I'm not teaching 10A or 10B because there are so many batches, buddy. It's not possible for me to teach every batch, isn't it? So I'm teaching 10E. That's why I'm not able to teach 10A or 10B. Okay. Okay, fine. So everyone understood? Sir, please take my name. Who is this lovely buddy? It's Anna. Anna Ilsa. Hi, Anna. Anna, I keep on talking to you, isn't it? Chalo, I'm really happy that you all understood that. Love you too, Goran. Love you too, Goran. Chalo, let's move on. If you all understood, check the answer also. So here the final answer for this is exactly the same what we had done. Root 2x plus 5 and x plus root 2, the same thing. And if you find the 0, so 0 is also the coming same, minus 5 upon root 2 and minus root 2. Cool? All good? All great? Hi Drishti. Onkar, I explained it, buddy. I'm very sorry if you did not understand. Onkar, can you just go through the recordings once again, or can you just rewind it and see it once again? That will really help you, buddy. हाय गुरुचरण, कैसे हो बेटा? यार अच्छा ठीक है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि मोर देन 400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग. अब सोचो अगर 400 बच्चों के नाम लेना शुरू किया तो क्या खतरनाक क्लास हो जाएगी, इजंट इट? 2-3 घंटे की क्लास बनानी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू. क्वाड्रेटिक फार्मूला आज आएगा क्या? नहीं मौलिक, आज नहीं आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग अगले सेशन में लेंगे, ठीक है? अगले सेशन या अगले के अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली. हाँ. सोमुदीप हाय. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है. क्या करना है? सेम तरीका. 100 को लो and constant लो. Just take 100 and the means first coefficient and the constant, multiply करो तो 100 आ गया. 1 into 100 obviously cannot make 20. So another method 2 into 50, but उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 into 50 भी नहीं बनाएगा. एक चीज बड़े सिंपल तरीके से दिख रहा है. Are you able to see कि 10 into 10 100 हो रहा है आजकल? मोदी जी ने बोला है. And 10 and 10 will make actually minus 20. कैसे? You can write it as minus 10x and minus 10x. क्या ये बात समझ आ रही है सबको? Minus 10x will make minus 20x. Plus 1 is as it is and 100x square is as it is. क्या ये सबको समझ में आया? Can I get a yes from all of you? सबको को जल्दी से. क्या ये सबको समझ में आया? All of you got it? Yes? Okay, cool. So if you all got it, so we can find actually we can take 10x as common, और 10x जैसे ही common लेंगे तो remaining will be here 10x और 10x minus 1. From these two terms nothing is common, so I'll just take minus 1, so 10x minus 1. So what we have got 10x minus 1 and 10x minus 1, the first bracket, and the second bracket is also 10x minus 1. So basically it is coming a whole square, isn't it? How many of you, just write it down very with full honesty, very honestly, just write it down. How many of you were actually able to see कि sir this is a perfect square? In the first go, how many of you were actually able to see कि sir ये a square है minus 2a into b के जगह पे 1 है and plus b square के जगह पे 1 square है? How many of you are actually able to see कि sir ये this is nothing but 10x minus 1 का whole square है? Come on, just write it honestly. Swikriti is saying me. Okay, Dhoni is saying not me. Athar is saying me. Huzaifa, okay, not me. Gurucharan, me. Prince, not me. Strong, not me. Onkar, me. Okay, means some of the students were able to find it, but some of them were not able to. Okay, no issues. I was able to find it, but actually my objective was not to make you solve this question in using this formula, because this formula we already know. So today's subject matter or today's topic is middle term splitting. So I hope you understood that how middle term splitting can solve almost all type of problems, any type, may it be a formula based question or may it be any other normal random question. Most of the places you will be able to find the solution using middle term splitting. Okay, so I'm pretty sure this is clear to all of you. If it is clear, adbhut. I love you too, Goran. I too love you. यार अच्छा, मेरे सेशन में ये क्या कहते हैं, श्वेता मैम की स्क्रीनशॉट्स क्यों भेज रहे हो? अभी इंग्लिश पढ़ने का मन है क्या? चलो लेट्स मूव ऑन गाइस. सो सॉल्यूशन फॉर दिस इज this one, simple, same, 10x minus 1 and 10x minus 1.
सॉल्व करोगे तो you'll get 1/10 and 1/10. ठीक है, रिपीटेड रूट, सेम रूट्स. ओके, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई. अच्छा ये बात बताओ कि इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें भी समझ पा रहे हो ना? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन कि या फिर यू रिमेंबर कि सम ऑफ रूट्स याद आ रहा है? हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था सम ऑफ जीरोस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. तो कुछ याद आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा वी हैड इवन डन वेरिफिकेशन. तो ये वही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन. सो आई होप यू आर ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, इजंट इट? चलो अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं. This is the next question and this is a very good question. So this is not going to be easy one. You'll have to solve it. So everyone please pay attention. You might get these type of questions in your examination, school examination in quadratic equations. Why I am saying this? See, quadratic equation तो हमने already पढ़ रखा है. We have done it in 9th. Then if they will give the same question जो 9th में उन्होंने दिया था, तो फिर difference क्या होगा? कोई difference होगा? नहीं होगा. तो obviously उनको थोड़ा question tough बनाना है. And that is where they will bring in these type of questions. ठीक है? तो यहाँ पे solve क्या करना है? कुछ ज्यादा tough नहीं है, बस थोड़ा सा manipulated है. कैसे manipulated है? You'll have to actually take the LCM. इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो. So you will get here x plus 5 numerator में minus यहाँ पे you will get x minus 1. तो आप यहाँ पे x minus 1 लिखोगे. Divided by denominator you will have x minus 1 into x plus 5. Okay? And will be equal to 6 by 7. अगर यहाँ पे now if you are going to solve it, so minus x and plus x gone, minus into minus is plus, so minus into minus is plus, plus 1 and 5 plus 1 is 6 divided by x into x is nothing but x square, x into 5 5x and minus x, so we have 4x and then minus 1 into 5, so that we have minus 5 and then this is equals to 6 by 7. ध्यान से देखो 6 and 6 gone, isn't it? You can send this to this side, this to this side. ये दोनों डिनोमिनेटर को आजू बाजू भेज दो. 7 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. इस 7 को इधर ले जाओगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. क्या यहां तक बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? सो वंस वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, अगेन यू नीड टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. So 1 into 12, we got 12. Break it into two parts to get 4. So I hope you are understanding it. 2 6 is 12. That will give you 4. So x square plus 4x can be written as 6x minus 2x. 6 minus 2 4 होता है. 2 into 6 है and minus 12 equals to 0. Now you have to solve it. तो यहाँ से x common ले लो. You will get x plus 6 and from here you take minus 2 common. तो x plus 6. Okay, and you will get the answer. So hence the answer will be x plus 6 into x minus 2. क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बता दो. Come on, come on, come on fast. Did you all understand it? सबको समझ में आया क्या? सर आप बहुत अच्छा समझाते हो. You are the best teacher. Thank you for your explanation. Thanks a lot, honey. Lovely, lovely comment. Thanks a lot, kiddo. Thanks a lot. Where in Maharashtra? प्रणव भाई कुछ और बात करने से बेहतर है थोड़ा पढ़ाई कर लो, isn't it? 2 and minus 6. Yes, Gaurang. Okay, Prince got it. Very good, Prince. 2 and minus 6 are going to be the zeros. Very good yaar, very good. I'm really happy that you guys are understanding. देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं. तो 2 and minus 6 is coming the final solution. ठीक है, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ें. Shall we move on? Shall we move on? बहुत मजा आ रहा है. Okay, that's great. So have you all liked the video? Just make sure that you all have liked the video. इतना like तो बनता है ना, isn't it? Have you all liked the video? Can I get a like from all of you? Sir, I am your old student. Hi Krishna, how are you buddy? कैसे हो कृष्णा? Okay, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े. 500 likes. Okay, that's great Sahil. Cool man. Too easy. That's very good. पलक, I'm happy कि तुमको too easy लग रहा है. हाँ, अब ये next question है. इसको थोड़ा ध्यान से देखो. This is a word problem. Okay. Okay. Looks like कि इसको मैंने okay. No issues. चलो देखते हैं. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन सेज आशु इज x years old while his mother Mrs. Veena is x square year old. सो आई होप पहले तो ये तुम लोग जानते होगे कि दिस इज कॉल्ड एज वर्ड प्रॉब्लम. ये तो देखा ही होगा लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में. वी हैव डन दिस वर्ड प्रॉब्लम टाइप का. तो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक पे भी बनते हैं. फर्स्ट थिंग, ठीक है. अब इसको पढ़ते हैं. तो व्हेन आशु इज x years old, his mother is x square years old.
ठीक है, मतलब अगर आशु की उम्र 5 साल है तो उसकी मम्मी की उम्र 25 है, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। 5 years hence, 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद, आफ्टर। तो 5 साल बाद मिसेस वीना विल बी 3 times एज ओल्ड एज आशु। अच्छी बात। तो यार ये बात बताओ, देखो लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आशु की बात की गई है और वीना की बात की गई, मिसेस वीना। तो आशु का अभी एज है x और मिसेस वीना का प्रेजेंट एज है x स्क्वायर। लेकिन x और x स्क्वायर ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, बट द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 5 years hence। तो ये जो प्रेजेंट नहीं, हेंस वाली बात है, 5 years hence, ये बात समझ पा रहे हो क्या कि आफ्टर 5 years आशुज एज विल बिकम x प्लस 5 एंड मिसेस वीनाज एज विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5। ये बात समझ आई क्या? पहले यस बोलो, कम ऑन, जस्ट टेल मी, इफ आशु का एज x है एंड इफ मिसेस वीनाज एज इज x स्क्वायर, तो आफ्टर 5 years यहाँ पे भी प्लस 5 होगा और यहाँ पे भी प्लस 5 होगा, क्योंकि मम्मी हो चाहे बेटा हो, 5 साल में दोनों 5 ही साल बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मम्मी 10 साल बढ़ जाएगी, इजंट इट? यस। चलो अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो अब पढ़ते हैं। 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times as old as Ashu। जो मिसेस वीना है x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएंगी मींस इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ एज ओल्ड एज आशु, आशु के एज के 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो आशु का एज लिखा हुआ है x प्लस 5। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आया? डिड यू ऑल गेट द इक्वेशन? कम ऑन जल्दी से, कृष्णा इज सेंडिंग सम सॉल्यूशन। कृष्णा तुमने क्या ये, अच्छा ये तुमने मेरा ही पीडीएफ भेज दिया है? अच्छा कृष्णा, ओके। क्या ये सबको समझ में आया? यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आप कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स स्क्वायर, ये 3x है, 3x को इधर ले आओ तो माइनस 3x, एंड देन 5 3s are 15, 15 को इधर लाओगे तो 5 minus 15 is minus 10 equals to 0। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 equals to 0। if you are going to do the middle term splitting तो 10 को ब्रेक करना होगा तो 5 2s are 10, 5 and 2 will make minus 3। तो here you will write x square minus 5x plus 2x minus 10 equals to 0। तो यहाँ पे सॉल्व करो, you will get x minus 5 into x plus 2, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया? कम ऑन टेल मी फ्रॉम हियर। पहले ये बताओ यहाँ पे सबको समझ में आया यहाँ तक? ऑल ऑफ यू गॉट इट? सर एपी कब स्टार्ट करोगे? प्रभु बहुत जल्दी करेंगे बेटा। एपी मेरे को लगता है जब भी चैप्टर का नंबर आएगा वैसे चलेगा, एनसीईआरटी के ऑर्डर को देख लो, वैसे ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो हियर यू हैव गॉट -2 एंड हियर यू हैव गॉट 5। अनडाउटेडली एज जो है, जो x लिखा हुआ था, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर एज नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये गया, एंड हेंस वी विल राइट x इज इक्वल्स टू 5 years। मतलब बेटे की उम्र 5 साल और मम्मी की उम्र 25 साल। 5 and 25, आशु इज 5 years old एंड मदर इज 25 years old। क्या ये सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? कम ऑन जल्दी से बताओ, सबको एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? 5 and 25, यस दृष्टि, एब्सोल्युटली राइट। इसको साइड ले जाओ, किसको साइड ले जाऊं? अच्छा सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, complete method। Okay, cool man, I'm really happy if you all understood that। Let's move on। Here's the answer as well, 5 years and 25 years, the same answer। ठीक है, चलो ओके। -5 एज, बेटा नेगेटिव एज नहीं हो सकता ना, नेगेटिव एज। आशु -2 साल का है, मतलब क्या 2 साल बाद आएगा? यार आने वाली चीज का तो कुछ नहीं बोलेंगे ना। अब ये तो अलग वाली बात हो जाएगी कि आशु 2 साल बाद आएगा, अब ये तो उनके मम्मी पापा बताएंगे आशु के कि कब वो आने वाला है, isn't it? Assume got it। Okay, thanks a lot, Ritika। Fine, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here's the next question। This next question is saying the altitude। अब ये एटीट्यूड गलती से लिखा हुआ है तो इस चीज को समझ लेना, बुरा नहीं मानना था। एटीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओ मैन, ये लोग भी कभी कोई अलग टाइप का टाइपिंग एरर करते हैं ना। Here it is altitude, it's not attitude। The altitude of a right angle triangle। ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में बात की गई है, तो चलो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। दिस इज राइट ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड इज गिवन, सो एल्टीट्यूड मेरे को नहीं पता, बट लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड इज का मतलब इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस में से 7 माइनस, लेस देन बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अच्छी बात है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज के बारे में बात किया गया है कि ये तो भैया 13 है, ठीक है। तो अगर ये 13 है तो अदर 2 साइड्स क्या होंगे? अच्छी बात है, मेरे को नहीं पता, तो मैं मानता हूं इसको A,
B, C. Base को can I just assume base as x? तो if my base is x, तो x minus 7 altitude क्या हो जाएगा? Altitude will become x minus 7. ये बात समझ आ रही है क्या? देखो altitude को मैंने x minus 7 लिख दिया बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो altitude x minus 7, base is x, तो hypotenuse is 13. Don't you think you can apply Pythagoras theorem? लगा सकते हो क्या? So I'll write according to Pythagoras अंकल के हिसाब से hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. इसको सॉल्व करके आंसर कौन बता रहा है मेरे को, ये बताओ. ओके, प्राची इज सेइंग यस. प्राची यस नहीं बोलो, प्राची आंसर बताओ जल्दी से. कम ऑन, कौन आंसर बता रहा है? हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर? जॉइन इट. ओके शिवेन, दैट्स ग्रेट. Who is going to give 12 and 5? Shivang is saying 12 5. Drishti is saying. Arvind is saying okay 12 and 5. Mayank ने भी दे दिया. Pythagoras theorem is used. Okay, x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5. Very good. Base 12, altitude 5. Okay, 5 12 12 5 दोनों राइट, दोनों के दोनों राइट हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत मेरे को है क्या? ये x स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे ओपन करोगे तो दिस विल कम x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इज इक्वल्स टू 130. 13 स्क्वायर को ओपन करोगे तो इट विल बी 169. इक्वेशन कोई बता दो मेरे को यार प्लीज, इक्वेशन बता दो क्योंकि इक्वेशन लिखने में मेरे को जोर आएगा. नहीं बताओगे तो लिखना ही पड़ेगा, क्या करूंगा. ओके जल्दी बता दो. 169 इधर भेज दो, तो 169 अगर इधर भेजा तो 9 से 9 को गया 60 40 120 माइनस 120 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 120 इक्वल्स टू 0. क्या ऐसा कुछ आ रहा है इक्वेशन? और यहाँ पे फिर हमें 2 कॉमन लेना होगा तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. 60 को ब्रेक करना होगा सो दैट कि माइनस 7 मिले. एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस नहीं माइनस 12x तो नहीं लग रहा मेरे को, माइनस 7x माइनस 60. यस शिवान, एब्सोल्युटली राइट. यस सोमुदीप यस. तो 60 को कैसे ब्रेक करें? 12 25 60, 12 5 से 60. यस, so that can actually work out. X square minus 12x plus 5x, because minus 12 plus 5 will also give you minus 7. तो if you got this, तो अब बस इसको सॉल्व कर दो. अब बच्चे सोच रहे होंगे ये 2 कहाँ गया? तो भैया इस 2 को मैंने यहाँ के डिनोमिनेटर में भेज दिया. 0/2 is these days 0. ठीक है, तो इस 2 के बारे में चिंता ना करें. अगर इसको सॉल्व करोगे तो you will get x minus 12 into x plus 5. x minus 12 मिलेगा और x plus 5 मिलेगा. From here you will get x equals to minus 5 and from here you will get 12. तो ध्यान रखना you have to ignore it because side length base कभी negative नहीं हो सकता. It can't be negative. So you will write that x is equals to 12 centimeter. मतलब आपका जो base है base को 12 होना पड़ेगा and altitude will be 7 centimeter. जिन बच्चों का रिवर्स आया है their answer is not right. So please mind it. ऐसा नहीं है कि सर 7 12 12 7 कुछ भी कर दें तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस 7. वेट अ सेकंड. ओके, एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 होगा. सॉरी, दिस इज नॉट 7, दिस विल बी 5. सॉरी. तो जिनका आंसर इसके अलावा आया है 12 और 5 के अलावा वो गलत है और ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए. एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड बेस शुड बी 12 सेंटीमीटर. क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes or no? And P is 5, B is 12. Absolutely right, Nahil. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात. यार बहुत सारे बच्चे कॉपी भेज रहे हैं. एक आध दो का नाम ले लो दो क्योंकि ये बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं तो इनका नाम लेना बनता है. It's Harsh Mishra, Tanishka and Mayank Jha, Dhruv and Anushmita and Ritvik and Payal and Avyaz and thereafter और कौन? अच्छा, ध्रुव गौतम, आना एल्सा एंड अनामिका शर्मा एंड ध्रुव हर्ष. अच्छा, ध्रुव और हर्ष तो कंटिन्यूअसली भेज रहे हैं. रिदम आल्सो सेंट. ध्रुव और हर्ष को डबल थम्स अप यार. ध्रुव, हर्ष एंड अव्यास, ये सारे बच्चे कंटिन्यूअसली भेज रहे हैं. दिया शर्मा, वेरी गुड यार, वेरी गुड. अव्यास, धोनी कुमार, हर्ष मिश्रा, एब्सोल्युटली ग्रेट यार. तुम लोगों के लिए स्पेशली तालियां. वेरी गुड, गुड एफर्ट यार. यू गाइस आर डूइंग इट रियली ग्रेट. क्योंकि YouTube को भी तुम लोग इतने इंस्टीट्यूशनलाइज करके पढ़ रहे हो, इतना फॉर्मली पढ़ रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे जरूर फायदा होगा. पता है, फायदा इन चीजों से नहीं होता कि तुम कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हो. फायदा इस चीज से होता है कि तुम छोटे जगह हो या बड़ी जगह, तुम उसमें डेडिकेशन कितना डाल रहे हो. तो इसलिए कहते हैं ना, कई बार बड़े लोकल कोचिंग से भी पढ़ के, बड़े लोकल स्कूल से भी पढ़ के, इनफैक्ट गांव से पढ़ के बच्चे अच्छे निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव में शायद पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई की होगा, वहां पे भी बहुत ध्यान दिया है. तो वेरी गुड यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड.
YouTube पे तुम लोग इतना ध्यान दे रहे हो, इसको मजाक में नहीं ले रहे हो, विच इज ऑसम मैन, ऑसम। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो इसका सोल्यूशन अगर देखना चाहें तो सोल्यूशन ये है, बहुत सिंपल सा। x की वैल्यू 12 आ गई और -5 वाली वैल्यू हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आवर बेस विल बिकम 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड विल बिकम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दैट वाज ऑल, लेकिन जिन बच्चों को ये सारे इन्फॉर्मेशन वीसैट और वेदांतु सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है, वो 2 मिनट रुक जाएंगे, वो में से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जिनको पता है वो जा सकते हैं, बट जाने के पहले बिफोर लीविंग द सेशन ओनली 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट दोस 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इज फर्स्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो तुम्हें पता है दैट विल गिव मी हैप्पीनेस, लाइक मेरे हैप्पीनेस के लिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के लिए, सब्सक्राइब तुम्हारे अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, put a lot of comments in the comment box because that gives me a lot of happiness when I read them, मुझको काफी खुशी मिलती है। Okay, and third thing, that join the telegram group because in telegram group I keep on posting the assignment sheet, तो मैं assignment sheet भी कुछ कुछ पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ जैसे भी मेरे को टाइम मिल जाए, तो I'll try to post the assignment sheet as well, so keep on just join a telegram group and stay updated. Okay, यार मैं भूल गया हूँ, उसमें पिंड मैसेज में मेरा वाला फोटो आ गया, उस दिन मैं भावनाओं में आके थोड़ा पिंड मैसेज चेंज कर दिया, तो वन ऑफ द एनी ऑफ द एडमिन प्लीज यार वो वापस से जो ड्राइव लिंक था ना उसको वापस से ग्रुप में भेज देना, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, या कोई मांगे तो दे देना उसको। चलो, तो जिन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है वो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ जिनको पता है जो जानना चाहते हैं तो जयराम जी की राम राम, मिलते हैं अगले सेशन में ऑन थर्सडे एट 3 o'clock। जिनको नहीं पता है वो रुक जाओ, 1 मिनट सुन लो कि क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ दैट वेदांतु हैज लॉन्च वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन वेदांतु फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इफ यू वांट टू जॉइन वेदांतु फॉर अ लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोर्सेज बहुत सस्ते नहीं होते हैं, मतलब बहुत महंगे भी नहीं है लेकिन हाँ सस्ते हैं, बट स्टिल उसमें डिस्काउंट की जरूरत पड़ती है। 20-30 हजार का कोर्स है, तो यू वुड लाइक कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ऐसे तो अच्छी बात है, 2-4-5 रुपए का रहता तो डिस्काउंट ऐसे ही नहीं मांगते। तो फॉर दैट डिस्काउंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, तो यू गेट अ गुड चांस to join Vedantu in a lesser price. So what you need to do, you need to go to this website and register yourself. It's absolutely free. 2-3 चीजें हैं, पहला तो फ्री है, दूसरा ये ऑनलाइन टेस्ट है, तीसरा ये घर से बैठ के देख सकते हो, सो होम बेस्ड टेस्ट, चौथा इसमें सब कुछ अलाउड है, बुक इज अलाउड, कैलकुलेटर इज अलाउड, इंटरनेट इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड, सो इट्स एन ओपन बुक टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो यू हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम, although thinking level is एग्जाम का अच्छा होता है, but you still have a good possibility that you can do here good। ठीक है, तो VSAT को ज्वाइन करो इस लिंक के थ्रू, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। So many students have already joined it and so much of amount of scholarship has also been dispersed. Okay, चलो, और ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है कि दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट वेदांतु सब्सक्रिप्शन। होता क्या है, तो आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव सीन Amazon Prime, isn't it? और यू वुड हैव सीन Netflix, Hotstar, बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है, इनफैक्ट जी भी चल रहा है, जी या फिर वूट भी चल रहा है, मींस मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन। So what you do, if you have to buy a subscription of Netflix, you pay them some amount monthly or yearly, and then the entire Netflix platform is open for you. You can watch any movie, any serial, anything, whatever you want. So the same concept has been brought to Vedantu as well. You pay some amount in monthly, quarterly, half yearly, annually, जैसे भी तुमको मन करे, वो अमाउंट जब जितने टाइम के लिए तुमने पे किया, for that much time entire Vedantu platform will be open for you. You can access any course, any class, any teacher, any time, any video, any assignment, any test, any मतलब सब कुछ any. So the entire Vedantu platform is open for you. What you have to do, you have to just go to this link vdnt.in/ytpro, ytpro पे जाओ, this is link is given in the description box as well. You have to use the code HPPRO, इससे 4000 का कोर्स will come to 2700। ठीक है, ये भी बल्ले बल्ले, तो 2700 में you'll get the subscription मिलेगा। करना क्या है, बस आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है, कौन से ग्रेड का कोर्स देखना चाहते हो या कौन सी चीज एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, टारगेट सेलेक्ट करना है एंड यू आर गुड टू स्टार्ट योर सब्सक्रिप्शन। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो ये पहला तो पेज ऐसा दिखेगा, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2700 में है, 3 मंथ का और सस्ते में है, 6 महीने का और सस्ते में है, सस्ता सस्ता सस्ता। You have to use this code HPPRO for getting this price 2700. You click buy now, all good to go। क्या क्या मिलेगा इसमें,
You will have live classes, personalized attention, पूरी recordings, notes, assignment, test and सब कुछ, मतलब पूरा वेदांतु प्लेटफॉर्म। ओके, कंप्लीट करिकुलम मिलेगा, सारे टेस्ट के प्रिपरेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, असाइनमेंट, लर्निंग मटेरियल, रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट्स, ऑल चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज, सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री हो जाएंगे, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा, इजंट इट? बहुत सारी चीजें हैं। तो बस मजे में एंजॉय करो, और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो दिस इज द रीचिंग आउट पॉइंट। ठीक है, तो अब बाय बाय कहें एक दूसरे को, isn't it? So we shall say a very goodbye to all of you. बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। हर बार जब भी आता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, और ये इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बोलना है, क्योंकि सच में मजा आता है मेरे को तुम लोगों के साथ। तो ये 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता, बट लिटरली आई एंजॉय लॉट। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। उसके लिए मैं भी वेट करूंगा, एंड आई विल बी very eagerly waiting to see you guys on Thursday again at the same time with the next topic of quadratic equation. Okay, so till then, bye bye, take care and good night, and see you all there in the next class. Till then, love you all. Bye bye. Bye.